Shall we continue? I'm audible to all of you. Yes, audible. Saima, Shushti, I'm audible? Yes, sir. Sorry for the interruption. So let's continue with the discussion. As I was telling you, that this year's government priority is creating digital public infrastructure for farmers in the rural areas. So building digital infrastructure, setting up agricultural accelerator fund to create new startup and innovative startups in the rural areas. Then horticultural clean plant program to be launched. As we all know that horticulture, India is one of the highest producer of the horticultural products in India. So that is why government is going to focus more on the clean plant. Clean plant का मतलब होता है, those plants which are not going to create any kind of, the diseases. So that is what is explained here. So that is what going to be the government's priority area. Then targeted funding for creating credit societies in the rural areas, and these credit societies will be created for, that is, animal husbandry, dairy and fisheries sector. We all know that the animal husbandry, dairy and fisheries sector is going to help more for the small farmers. Green revolution has helped only to the big and large farmers, but this animal husbandry, dairy and fisheries sector, this has helped to the small farmers. So government is going to create a 20 lakh crore rupees credit fund, which will be used for animal husbandry, dairy and fisheries. So in GS paper 3 topic, economics of animal rearing. GS paper 3 में topic है economics of animal rearing, जिससे government को एक second income मिल सकता है from animal husbandry, from dairy and from fisheries. Second, making India global hub for millets. As we all know, this year government, as well as not only Indian government, at international level also we are celebrating international year of millet. So that's what is mentioned here. Support will be given to IIMR, that is Hyderabad, for promoting research. Anyone knows what is IIMR? Indian Institute of Millet Research. जोवार का रिसर्च सेंटर हैदराबाद में लोकेटेड है. तो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट पे the government will be giving more money for research in millet. That scheme is called as Sri Anna. So we all know that this year government is focusing more on the millets. So this is what the government is trying to focus, that making India global hub for Sri millets. All of you remember when Indian Prime Minister visited to, I think, G20 meeting, or I don't remember, but एक मीटिंग में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे दुनिया को ये कहा था कि इंडिया कैन गिव सॉल्यूशन टू द ग्लोबल न्यूट्रिशनल क्राइसिस और ग्लोबल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम. उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि पूरी दुनिया न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी से गुजर रहा है. इंडिया कैन गिव अ सॉल्यूशन टू दिस, एंड इंडिया कैन प्रोवाइड मिलेट्स टू द होल वर्ल्ड, which will reduce the nutritional problem of the world. So that is what is mentioned here. The support will be given for IIMR, that is Indian Institute of Millet Research. So India, the priority area is to make India global hub for millets. Then setting up a widely available storage capacities. India में storage capacity को बढ़ाना जरूरी है. हमने देखा था कि one of the important problems which are being faced by the farmers in India is we do not have the enough storage capacity. Majority of our agricultural produce is wastage because of the lack of the storage facilities, because of the lack of the processing industries in India. So government is going to set up widely available storage capacity. Alauddin Khilji ने भी यही कहा किया था उस समय में. Like Alauddin Khilji has tried to create a supply chain in all the part of the Sultanate, and that's why he could create a very good, the supply chain management of the food grains in India. So जो best होता है हमारा, like lot of milk, lot of our food grains, lot of our perishable vegetables like tomato, onion, potato, they get the perished, तो उनको store करने के लिए एक storage capacity बनाया जा रहा है. You must be knowing that the Adani Group of Industries is having largest chain of cold storage facilities in India now. India में जितने भी सारे, almost majority of the cold storage facilities are being run by Adani Group of Industries. Anyways, that is the thing here. So more credit will be given to agriculture, and of course we are having a record food grain production last year. तो हमने एक record food grain production किया है. ये एक fact आपको ध्यान में रखना है. Now next is health sector. What is government going to do? 157 new nursing colleges. As we all know, during the pandemic we have observed that there is a skewed proportion or ratio
of health worker and patient number, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट है और बहुत कम हेल्थ वर्कर इंडिया में है. So to address this skewed ratio of the health workers as well as the patients in India, so 157 new nursing colleges is going to be established. Sickle cell anemia elimination mission start किया जाएगा. We have already achieved some of the targets with respect to the diseases like polio, with respect to the diseases like smallpox. ऐसे जो इंडिया में जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में रहने वाले जो डिसीजेस हैं, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, उसको हमने वी हैव नियरली इरेडिकेटेड इट, नॉट कंप्लीटली बट नियरली हमने उसको इरेडिकेट किया. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम व्हिच इज देयर इन इंडिया इज सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन. तो आज जाकर आप देखेंगे, अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज दिस सिकल सेल एनीमिया, हो सकता है इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी माइट आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सिकल सेल एनीमिया व्हिच इज अ वेरी रेयर डिसीज. तो उसको लेकर उसको एलिमिनेशन करने के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ मिशन फॉर दैट. न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल and joint public as well as private medical research to encourage via ICMR lab. So more health related research government is going to do. What they are going to do in education and skilling. GS paper 2 topic development and management of the social sector, health, education and human resource development. तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? That is what is explained. This is all the social sector expenditure of the government. Health, then education. Revamped teachers training via District Institute of Education and Training, that is DIET. As we all know, जब भी मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि what is the important problem of the primary education in India as well as secondary and higher education in India is that हमने देखा था कि सबसे आसान जवाब जो होता है या सबसे पहला जवाब क्या था कि teachers are not properly trained. All of you agree with that? Are our teachers properly trained at primary as well as secondary level? Higher education में तो no sir, ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इवन एलिमेंट्री स्कूल में जो टीचर्स होने चाहिए दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड. तो रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग विल बी स्टार्टेड एट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड डायट. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विल बी क्रिएटेड फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट. स्टेट विल बी एनकरेज्ड टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स. तो कुछ फिजिकल लाइब्रेरीज बनाए जाएंगे पंचायत लेवल एंड वार्ड लेवल पे. दैट इज व्हाट इज दे आर गोइंग टू डू इन एजुकेशन एंड स्किलिंग इन इंडिया. Now the big tent that accommodates all. Do you remember this term? जिस पेपर में आया था कि big tent government is going to create. एक ऐसा टेंट बनाया जा रहा है कि जिसमें सब कुछ कवर किया जाएगा. Big umbrella they will be creating. The 9 crore drinking water connections to rural houses, Jal Jeevan Mission के अंतर्गत. Cash transfer to the farmers under PM Kisan, that is 2.2 lakh crore rupees. Insurance will be given to the farmers under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana as well as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana. This is not farmer, this is common people, that is 44.6 crore persons will be brought under these schemes. 11.7 crore households will उनके लिए टॉयलेट्स दिए जाएंगे अंडर स्वच्छ भारत मिशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ द करंट गवर्नमेंट. तो ये प्रीवियस स्कीम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट दे इंट्रोड्यूस सम न्यू स्कीम्स एंड एज वेल एज दे एलोकेट फंड्स टू द एग्जिस्टिंग स्कीम. सो जल जीवन मिशन वाज द एग्जिस्टिंग स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन वाज आल्सो एग्जिस्टिंग स्कीम, उसके लिए इतना खर्च किया जा रहा है. And PM Kisan is also existing scheme. This was also existing scheme. Jan Dhan Bank account 47.8 crore rupees will be given for Jan Dhan Bank account. 220 crore rupees will be allocated for COVID vaccination and 9.6 crore rupees will be given for free LPG gas connection under Ujjwala. So these are all the flagship programs of the government, which government feels that it is going to have Sabka Sath Sabka Vikas, that is inclusive growth. So GS paper 3 topic, inclusive growth. Clear? So here we get the information. अब यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है. एज पर गवर्नमेंट ये जो है डेटा है जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था. दिस इज द रियल जीडीपी एंड दिस इज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया हुआ है. एंड दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 2020 लेवल का, मतलब दिस इज क्या कहते हैं करंट जीडीपी को जो हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी. तो करंटली द नॉमिनल जीडीपी इज गोइंग टू बी दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर. फाइनेंशियल ईयर 2023 में इट इज गोइंग टू बी अराउंड 4% पर एनम वो ग्रोथ हो रहा है. एंड हियर यू कैन सी दिस रियल जीडीपी जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है. सो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट सेज दैट द ग्रोथ इज रेजिडेंट. अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इज अगेन 4-year low. Unemployment rate, sorry, this is not employment rate, this is unemployment rate. So as per the estimation, the urban unemployment rate is
7.2. In March 20 during pandemic, we all know that urban unemployment rate has increased to the historic level, that is 20.9%, but it has been slowly reduced. Second wave में again ये बढ़ गया था, धीरे-धीरे वो कम हो गया. That's what you can see. So unemployment rate is at 7.2% now as per the government data. So reaching to the last mile, Pradhan Mantri PVTG Development Mission 2 will launch. Anyone knows what is PVTG? इससे पहले भी ये वर्ड आया है न्यूज़पेपर में, कंटिन्यूअसली दिस वर्ड्स कीप्स ऑफ कमिंग इन. PVTG. So for tribal groups. माइल मतलब क्या होता है? All of you know what is last mile. मुझे बताइए कि डेवलपमेंट कौन से लोगों तक पहुंचता नहीं है? Which are the vulnerable और which are the people जिन तक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स है वो उनके तक पहुंचते नहीं है? सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन इंडिया का कौन सा? People living in remote areas. A tribal group. What they are called? Tribal group, sir. Yes. PVTG. UPSC ने already ये क्वेश्चन पूछा है that particularly vulnerable tribal group which among the following are statement उन्होंने पूछा था कि particularly vulnerable tribal group के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. तो ट्राइबल के लिए एक मिशन शुरू किया जा रहा है, that is what is mentioned here, that प्रधानमंत्री vulnerable tribal groups. There are certain tribal communities in India which are vulnerable, तो उनके लिए एक डेवलपमेंट मिशन शुरू किया जा रहा है. GS paper 3, one more topic, linkages between development and left wing extremism. All of you know, हमने देखा था कि maximum people who are engaged or maximum people who are those who join the left wing extremism या जो नक्सलाइट मूवमेंट को सबसे ज्यादा लोग जो ज्वाइन किए हैं, these are the tribal people, those people who are living in tribal areas. तो उनके लिए अलग से डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है, that is what you can see here. Linkage between development and left-wing extremism, inclusive growth, etc. Financial assistance will be given for sustainable micro irrigation in drought-prone regions of Karnataka. कर्नाटका के जो drought-prone regions है उनके लिए micro irrigation के लिए financial assistance दिया जाएगा. Anyone knows which part of the Karnataka must be drought-prone? याद है मैंने आपको बताया था when we were discussing the geography, world geography, sorry, इंडिया की geography हम देख रहे थे. तो इंडिया कर्नाटका का एक हिस्सा है कि जहां पर रेन शैडो रीजन है, एंड दैट रेन शैडो रीजन इज अ ड्रॉट प्रोन एरिया. Sir, north region of Karnataka. Yes, northern districts of the Karnataka like Gulbarga, Bidar. Yes, and like Bijapur, I think. Yes, these sir. are the states. These are the the areas which is a drought prone. तो वहां पे माइक्रो इरिगेशन के लिए दिया जाएगा. GS पेपर 3 टॉपिक. You remember GS पेपर 3 topic? Various irrigation and storage system. So this year government is focusing for these irrigation systems in Karnataka. Now more teachers will be recruited for Eklavya model residential school. Congress government has started Jawahar schools. They have also started Kendriya Vidyalayas. They have also started एक बालिका school. I don't remember, Kasturba, I guess. Kasturba Balika Vidyalaya kuch hai. Central government के schools. As we all know that both central government as well as the state government has the responsibility of education. Education is a concurrent list. So that's what you can see here, that union government is going to create 740 model residential schools which are called as Eklavya schools. ठीक है? Bharat Shri, they are going to digitize of the ancient scripture. Remember, they might ask a question in prelims exam. Prelims exam में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत श्री स्कीम किससे रिलेटेड है. This is the scheme has been set up to digitize our ancient inscription. Saima, which rulers in India, or in which period in India the scriptures have been written on wall, on Tamrapat, or on on the temples? All of you remember? हमने देखा था कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोका has written some of his orders as a part of Dhamma policy on the rock. Then some of the उत्तर मेरूर या इलाहाबाद जैसे कुछ एरियाज है इंडिया में, बहुत सारे टेम्पल्स इंडिया में जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, दिस इंस्क्रिप्शंस इज गोइंग टू बी डिजिटाइज्ड बिकॉज़ आगे फ्यूचर में जाकर वो लुप्त ना हो या वो एक्सटिंक्ट ना हो. इसके लिए हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं
उनको डिजिटाइज किया जाए. रिमेंबर, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट व्हाट दिस भारत श्री स्कीम इज रिलेटेड टू. क्लियर? Yes, sir. Next is infrastructure and investment. So as we will know कि this year government जो अप्रोच है टॉप टू बॉटम अप्रोच, यही टॉप टू बॉटम अप्रोच के बारे में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में कहा गया है. Incentives to boost investment in infrastructure and productive capacity, and as per that it is going to have a multiplier effect. All of you remember multiplier effect? मतलब जब इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है, that is what is called as multiplier effect. So as per the government, boosting investment in infrastructure and productive capacity, it will have a multiplier impact, and it will rise in growth and employment. So this is what the government is planning, top to bottom approach. So capital investment government has increased, that is 10 lakh crore rupees government is going to spend on the capital investment, and a 50-year interest-free loan will be given to the state government for infrastructure. तो ये जो लोन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कैन यूज दैट मनी ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. देन रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन एलोकेटेड, दैट इज हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले. एनीवन नो गवर्नमेंट इज, ये जो रेलवे के लिए जो दिया जा रहा है इसके लिए कहां खर्च किया जा रहा है? गवर्नमेंट हैज लॉन्च सम न्यू रेल, लाइक वंदे मातरम. वंदे मातरम के लिए यूज किया जा रहा है, बुलेट ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. So that you can see that 2.4 lakh crore rupees has been allocated to railways. Then 100 transport projects, end-to-end connectivity of ports, coal, steel, fertilizer sectors. GS paper 3 topic, mobilization of resources के लिए ये important है. Transport infrastructure के लिए खर्च किया जा रहा है. Urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities via establishment of UIDF. UIDF means Urban Infrastructure Development Fund. उसके लिए कुछ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है. दैट इज व्हाट इज कैन सी. सेकंड इज हमारा जो पोटेंशियल है, एज आई ऑलवेज से दैट इट इज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ. सो हाउ दिस डबल डिजिट ग्रोथ कैन बी अनलीश्ड? फर्स्ट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए. 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स इज गोइंग टू बी सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा. सो एआई बेस्ड सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग इन एग्रीकल्चर, लाइक कोई भी प्रॉब्लम है इंडिया के एग्रीकल्चर, लाइक वी हैव अ प्रॉब्लम्स लाइक क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, वाटर इज नॉट अवेलेबल, फर्टिलाइजर इज नॉट अवेलेबल, और यू कैन से एग्रीकल्चर में स्टोरेज फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके we can give solution to the agriculture. We will also give solution to the health sector problems. We can also give solution to the sustainable cities, because we know our cities are non-sustainable. हमारे cities में floods ज्यादा आते हैं, हमारे cities में transport system problem है, हमारे cities में housing problem है, हमारे cities में water is not, drinking water is not properly available, waste management is not properly available, right? तो ये जितने भी सारे सिटीज के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जीएस पेपर 1 का टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड देयर रेमेडीज. सो विद द हेल्प ऑफ आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन गिव सॉल्यूशन, वी कैन गिव रेमेडीज फॉर क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल सिटीज. सेकंड इज दे आर गोइंग टू हैव अ नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, एंड दिस विल एनेबल एक्सेस टू anonymized data for research by startup and academic. Startup companies as well as academics लोगों के लिए कुछ डेटा दिया जाएगा, and this data will be used for unleashing our potential, growth potential. विवाद से विश्वास, मतलब जो भी जब those micro small medium enterprises who could not pay their taxes during the corona period, during pandemic period, जो अभी गवर्नमेंट और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट, उसको क्या किया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी. सो विवाद नहीं करना है, विश्वास क्रिएट करना. So 1, विवाद से विश्वास 1, that is less stringent contract execution for MSMEs, and relief will be given for MSMEs those who have been affected during the COVID period. Second is विवाद से विश्वास 2, faster settlement of the contractual dispute between government and government undertakings. E-court will be launched where effective administration of the justice will be started. Entity into DigiLocker. DigiLocker, all of you know, question has been already asked by the UPSC. What are DigiLocker? DigiLocker is going to be set up for using by business enterprises and charitable trust.
facilitating secure online storing and sharing of the documents with business ecosystem. Then fifth generation lab services will be set up, that is around 100 labs, which will be based on application of development, employment potential के लिए किया जा रहा है. Like maximum people, you know, बहुत सारे लोग अगर हम देखें ना इंडिया में, you know, maximum people want to become IAS and IPS and constable, government job join करना चाहते हैं. But very few people want to join research. Very few people want to join, you know, चाहे वो social research हो, political research हो, scientific research हो, research in education हो, research in health हो, कोई भी हो, उसमें बहुत कम लोग करते हैं. तो उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज किए जाएंगे टू टैप द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी गिवन फॉर डायमंड्स. यू नो, मैक्सिमम अगर कोई चीज अगर डायमंड करते हैं इंडिया में, इंपोर्ट का अगर देखेंगे द लिस्ट ऑफ highest goods which we import, diamond is one of it. So India wants to create a lab which will grow domestic diamonds. मतलब इंडिया में ही डायमंड बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है to reduce the import dependency by encouraging domestic production. डायमंड का ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, प्रोडक्शन करें. मुझे लगता है इंडिया में कुछ एरिया में डायमंड के शायद वो मिल गए थे, खाली में. 1 month back, 2 month back, some of the states in India we have you know, got some diamond mines in India. I think they are in, some of them are in Madhya Pradesh and some of them are in the Chhattisgarh, I guess. Anyways, now next important is green growth, sustainable development. So sustainable development, government is going to start green credit program, and it will be given for this, such type of credit will be given for greener, you know, the technologies. PM Pranam is going to be launched. Remember, question can be asked in prelims exam. PM Pranam is related है. This is related to incentivizing to promote uses of alternative fertilizer. All of you know, India is using chemical fertilizer, और chemical fertilizer का इस्तेमाल करने से lot of ecological problems have been created. There has been distortion in the soil ratio, like NPK ratio में problem हुआ है. So PM Pranam scheme has been started to incentivize usage of alternative fertilizers. Waste to wealth plants have been started, that is called Gobardhan, promoting, you know, the Gobardhan plants. Then Mishti to be taken up for mangrove plantation along the coastline. What is the meaning of Mishti? Anyone from Bengal? आप लोग में से कोई वेस्ट बंगाल से? मधुरिमा, what is the meaning of Mishti? I think it's a Bengali word, right? Yes, sir. It means, Hello? right? Hello. Yes, madam. Yes, sir. I'm from Bengal. So Mishti means sweet or anything else? सर स्वीट का है, और उसके बाद जूट का जो है वो है, एंड क्ले आर्ट भी है. Okay. मिष्टी मीन्स अर्थ भी हो सकता है. Okay. तो यहाँ पर आई थिंक मिष्टी इज टोकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट. Okay. So as we all know that West Bengal and other areas, they are having one of the highest amount of the mangrove forest in India, which I am going to discuss in geography. अब geography of India हम discuss कर रहे हैं, तो there I will be, you know, discussing that कि इंडिया में कौन से फॉरेस्ट कौन से एरिया में ज्यादा है. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड most of the coastline, especially in Sundarban, Odisha coast. We also found it in the Gujarat coast, etc. तो मैंग्रोव प्लांटेशन को इंक्रीज करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिष्टी प्रोग्राम is going to be started. Amrit Dharohar is going to be implemented for optimal usage of wetland. So what is this wetland? What are the importance and significance of this wetland in ecosystem? That I will be discussing with you in the basics of environment class. Environment class में हम देखेंगे कि why these both mangrove plants as well as wetlands are important for sustainable ecosystem. That I will be discussing with you. तब समझ में आ जाएगा. So as a part of that, they are also going to start around 10,000 bio-input resources centers to facilitate farmers to adopt natural farming, promotion of battery energy storage system, promotion of coastal shipping for energy,
Then funds to be allocated for replacing old polluting vehicle. Old polluting vehicle दे दीजिए और electric vehicle लेके जाइए तो उसके लिए भी funds दिया जाए. So this is how the government is going to have, the green development in India, where less and less pollution and more sustainable development government is going to have. Next is Amrit PD. As we all know, the next important priority of the government is youth. So how the government is going to, help the youth to get the opportunities. एक 2020 मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a future towards joblessness or it is an opportunity for upskilling and upgrading, ऐसे कुछ स्टेटमेंट था, and you were supposed to write around 1000 words. समय में यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या इससे फ्यूचर में जॉब लॉसेस होगी या ये हमें अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करने का एक नया अपॉर्चुनिटी है. क्या लगता है आप लोगों को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब चले जाएंगे और इट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द जॉब्स. वो टोन समझ में आ गया ना आपको? वो टॉपिक का जो टोन था, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यही होने वाला है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कुछ चीजें खुद से होती जा रही हैं जहां पे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्या उससे जॉब चले जाएंगे या उससे नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर. हाउ विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द यूथ पावर इज गोइंग टू बी यूज्ड. ये जो पीढ़ी है, आप लोग जो हैं, आप अमृत काल के लोग हैं, आप अमृत पीढ़ी हैं. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. कवरिंग द न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा. तो इन सब का इस्तेमाल करके क्या किया जाने वाला है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. तो आने वाले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इन कोर्सेज को ज्यादा पढ़ाया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा. Tourism sector would, like, of course, as I told you always, that tourism is one of the sector which can create major employment in India. So at least 50 destinations is going to be selected through challenge mode to be developed as a complete package for domestic and foreign tourists. States will be encouraged to set up unity malls, that is one district one product किया जाएगा, GI tagging किया जाएगा, handicraft products बनाए जाएंगे for promotion of sale of ODOP, one district one product. Now financial sector, banking, capital sector के लिए क्या किया जा रहा है? National Financial Information Registry will be created to enable efficient lending, because we know lending is one of the important problem in India. So efficient lending के लिए government is going to set up National Financial Information Registry to enable efficient lending, promote financial inclusion and enhance financial stability. Setting up of Central Data Processing Center for faster handling of the Companies Act. Then credit guarantee schemes for MSME. MSME को credit guarantee दिया जाएगा by the government, that is 2 lakh crore rupees. महिला सम्मान बचत पत्र, सेविंग डिपॉजिट शुरू किया जा रहा है. वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग फॉर अ 2-year पीरियड विद अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 2 lakh rupees फॉर वुमेन. देन बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजंस, 30 lakh rupees जो बचत करेंगे उनके लिए बेनिफिट्स दिया जाएगा. अदर प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज लाइक गिफ्ट IFSC, create more trained professionals in security markets via award of educational certificate. तो सिक्योरिटी मार्केट के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एनालिस्ट क्रिएट करने के लिए अगेन ट्रेनिंग दिया जा रहा है. दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर, टू क्रिएट मोर प्रोफेशनल्स इन सिक्योरिटीज मार्केट. नाउ हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव द फिस्कल मैनेजमेंट. फिस्कल मैनेजमेंट मतलब बोरोइंग. दैट्स व्हाट आई, हाउ मच लोन गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो. सो 50-year interest free loans will be given to state. It will be spent on capital expenditure, infrastructure. Part of the loan is conditional on states increasing actual capital expenditure, and parts of the outlay will be linked to the states undertaking several reforms. Fiscal deficits of 3.5 of GSDP. GSDP मतलब state GSDP. State government needs to have 3.5% fiscal deficit. And ideally it should be 3%, but 5% उनको encourage करके दिया जा रहा है. Fiscal deficit target for the states will be 4.5% by 25-26. They have been asked to reduce the fiscal deficit to 4.5%.
No, I think this is the fiscal deficit target of the union government, not the state government. But 25-26 government is trying to bring the fiscal deficit to 4.5%. So macroeconomic fundamentals government ने दिया है. As per the data, you can see fiscal deficit is going to be 5.9% this year. I think this is the fiscal deficit. Revenue deficit is 2.9%. Primary deficit is 2.3%. GST to gross revenue collection का भी data दिया हुआ है. You can see here. Government is increasing the capital expenditure. Financial year 16 से अब तक हम देखेंगे, in the last 10 years the capital expenditure of the government has increased tremendously. 4 times you can see it has been increased by multiple of 4. NPAs have been reduced. All of you know what are NPAs? Non-performing assets of the bank. तो non-performing assets पिछले कुछ सालों से reduce हो गए. In 20 it was 8.2%, 7.3%, 5.8%, and in September 2022 it is 5%. Foreign exchange reserve का डेटा दिया हुआ है. Import cover. All of you know what is import cover? I have explained to you in the basics of Indian economic class. Import cover मतलब कितना हमारे पास foreign exchange reserve है. That import cover is up to 15 months now. Can you see? 15 महीने तक. एक समय ऐसा था when Manmohan Singh was the Prime Minister of India. India was having an import cover of 5 years. Now what is import cover now? Only 15 months. मतलब up to 15 months import करना इतने हमारे पास foreign exchange reserve है. CPI consumer, WPI, you can see. I expect हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. कैन यू सी हियर? CPI and WPI ये रिड्यूस होता जा रहा है. This was the question which you asked me. Next is tax proposals. Higher exports, higher domestic manufacturing, macro value addition in the economy, green energy mobility. So what are the changes? Import of capital goods in lithium and ion battery manufacturing में किया गया है. It will be imported more. अब आज जाकर आप देखेंगे कि lithium and ion battery का क्या importance है in mobile manufacturing. How it is more greener mobility. I think lithium ion batteries are used in electric vehicles, I guess. Question has been asked, in 2015 prelims exam में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर पेस्ट के इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई है. तो सिल्वर then shrimp is variety of lab grown diamonds go and check out and diamonds. Sir, Copper you're not scrap. audible. सर आवाज येत नाही तुमचा सर. Fast Sagar. Hello all, can you all hear my voice now? Yes, हो now येते audible. सर. Okay. Fine. Now let's go on to the direct taxes.
डायरेक्ट टैक्सेस में हमने देखा है कि वन वर्ड व्हिच इज कंटिन्यूअसली इन द डिस्कशन, दैट इज न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स। तो टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, मतलब न्यू टैक्स रेजिम ऐसे बनाया गया है, you know, so that it can become very easy for the people to pay the taxes. Earlier what used to happen in the old tax regime, there were so many types of exemption, there were so many types of, you know, the benefits have been given to the people who were paying the taxes. अब जिन लोगों को benefits नहीं लेना है, they can go for the new tax regime where, you know, people are not saving money. Those who are not, you know, investing in share market, who are not taking the insurances, or those who are not spending money on FD etc. तो उन्हें they can go to the new tax regime, and in new tax regime up to 7 lakh no taxes will be, you know, no taxes will be imposed on you. But अगर किसी को tax benefit अगर लेना है, 80 CC is Act Income Taxes, अगर आपको tax benefit लेना है तो आप tax benefit ले सकते हो, लेकिन आपको उस समय में छूट आपको 7 लाख नहीं मिलेगी, उस समय में आपको छूट मिलेगी सिर्फ ओनली अप टू 3 लाख। अबाउट 3 लाख अगर आपका इनकम है तो you have to pay the tax above 3 lakh rupees if you want to avail the tax benefits. So this is what is the difference between old tax regime and new tax regime. So as per the government, the new tax regime is, you know, easier, compliance burden ज्यादा नहीं है, easily आप कर सकते हो। That is why government, as you know, कि जितना ज्यादा टैक्स फाइल करना इजी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा या सिंपल हो जाएगा, more people will not pay the taxes. So that is what is the tax proposal. To reduce the compliance burden, promote entrepreneurial spirit, and provide a tax relief to the citizen. 45% of the taxpayer were processed within 24 hours. 93 to 16 days, मतलब ये प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया कि कितने इजीली टैक्स फाइल करना भी इजी हो गया है। Now further simplifying the personal tax, exemption limit increased to 3 lakh rupees. Then income tax limit, rebate of income tax increased from 5 to 7 lakh rupees for the new regime. That is what is explained here. तो नए रेजिम के हिसाब से यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अप टू 7 लाख यू विल नो, यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस। एंड इन न्यू टैक्स रेजिम जो पुराना जो है, यहाँ पे अप टू 3 लाख यू विल गेट बेनिफिट्स, बट अबव 3 लाख यू हैव टू पे द टैक्सेस। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन से, एज वी ऑल नो, इंडिया इज हैविंग अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो एज योर इनकम इंक्रीजेस, here you can see you have to pay the more taxes. So above 15 lakh if your income is there, you have to pay 30% of the total tax of your total income. Then this slab has been given you. तो ये जो प्रोसेस है, ये कॉमन लोगों को पता नहीं होता कि कौन से स्लैब में पे करना है, क्या करना है। That is why it is complicated. This is simple. Up to 7 lakh no tax, above 7 lakh you have to pay the tax, and that is flat tax rate above 7 lakh. Now simplifying the tax benefit for industry, इससे फायदा होगा, that is what is explained here, इससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, that's what government is expecting. Corporate tax is 15%, earlier it was 30%, अब उसको 50% किया गया है। स्टार्टअप के लिए भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, that is 1 year you don't need to pay any taxes. Rationalization of taxes again, only 1 minute is left. I think we are done with now. So this is what the total features of the budget in this year. तो as a UPSC aspirant आपको बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा कुछ रिसर्च वगैरह करना नहीं है। You just need to understand कि इस साल का गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट ने कैसे बनाया। I hope all of you people have understood this year's budget. Those who have attended my economic classes, मुझे ज्यादा समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया, don't worry. When I will be taking the economic class once again, next year का गवर्नमेंट बजट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Any doubts for today's session? So what's the percentage of tax for above 7 lakh in the new regime? Flat 6%. Okay, sir. Regime, there are different tax.